Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 13th lecture of this series of Indian Constitution. Let's start the cultural and educational rights. Article 29. So they are saying any section of citizens residing in the territory of India or any part thereof, having a distinct language, script or culture of its own, shall have the right to conserve the same. So they are talking about any sections of the citizens of India, any sections of the citizens residing in territory of India or any part of India, having a distinct language, script or culture of its own, shall have the right to conserve the same. So first requirement for Article 29 Clause 1 is you should be citizen of India. You should be citizen of India. So they are talking about citizens of India, any sections of citizens residing in territory of India or any part thereof. So obviously citizens of India. Actually you should be citizen residing in territory of India. Citizens residing in territory of India. Then they say that you have distinct language, script or culture. So language, script or culture. So as we have already discussed for an example in earlier lecture also, that different groups are formed in different states when they established in another states. For example, say in Delhi, some groups are formed of Maharashtra culture, some of Bengal, some of Assam, so different kind of associations are formed. So what is the basic motto of their associations? To prevent their culture in the other state. So these groups are formed for conserving their culture. So जो West Bengal का group है, they together form on the date of Durga Puja, they together form celebrate Durga Puja. Similarly from Maharashtra, they celebrate the Ganesh Puja and so forth. So they are conserving their culture or language or script, and they are having a right to conserve distinct language, script or culture. So you have right to conserve, but first of all you have to prove that I have distinct language, script और a distinct culture. अब इस आर्टिकल में पूरे में ये कहीं नहीं लिखा है that how you will conserve. They are just saying that you can conserve, but they are not saying how to conserve. So you can conserve language, script or culture by any lawful method. For example, by making groups, making library, distributing pamphlets, etc. You may start some special training programs. You may start some special workshop. What is the script? For example, language, Punjabi language, but its script is Gurmukhi. So similar things you can do for preserving your script also. So you can do any lawful practices to preserve. But if you see the marginal heading, that is protection of interest of minorities, but in main section in clause 1 nowhere minority word is used. Now the question arose whether this right belongs only to the minorities. For example, say in Punjab, Punjabi speaking people are more. So अगर पंजाब में बात करें तो पंजाब में मेजॉरिटी पंजाबी बोलने वालों की ज्यादा है. तो इस क्लॉज इस मार्जिनल हेडिंग के अनुसार अगर पंजाब में कोई इस तरीके का ग्रुप या फिर कोई लॉफुल प्रैक्टिस करता है, then it should not be allowed as per the marginal heading because they are in majority in Punjab, because this right is allowed only for minorities. So in Punjab में if Hindi people do something, that is allowed, but if Punjabi speaking people do something, then it is not allowed. Similarly in Uttar Pradesh, if Hindi people do something, that is not allowed,
and if other state like Telugu, Maharashtra and all those do something, that is allowed if you go by the marginal heading. Then is it proper? मीन्स जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको अपने स्क्रिप्ट, कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का राइट नहीं मिलेगा, लेकिन जो माइनॉरिटीज है उनको राइट मिलेगा. सो यू मस्ट अप्रिशिएट द मार्जिनल हेडिंग वुड नॉट कंट्रोल द सेक्शन or article. The rule of interpretation says the marginal heading is only the introduction and the main operative part is the main section. So main article के main part में उन्होंने कहीं पे भी minority शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है. Marginal heading is not the operative part. It is just like preamble to the article or section. So since the marginal heading is the working as a preamble to the main section, so that will not be the operative part. Means जो actually में लागू होगा, that is the main section, and in this the main part there nowhere they are writing the word minority, using the word minority, and therefore this article applies on majority and minority both. सो ये जो राइट है आपका कंजर्व करने का, ये दोनों पर है, सिर्फ माइनॉरिटी पर नहीं है. बट व्हेन यू गो बाय द स्पिरिट ऑफ दिस आर्टिकल, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस आर्टिकल. सो अगर हम स्पिरिट को देखें, द सेक्शन इज मेड फॉर प्रिजर्विंग द कल्चरल माइनॉरिटीज. There are minorities in terms of script. There are minorities in the term of language. That is linguistic minorities in India. किसी स्टेट में कोई माइनॉरिटी में होगा, किसी स्टेट में कोई और माइनॉरिटी में होगा, and that may result into some kind of fear element. That the fear element is that in the majority area their language or script or culture is getting suppressed. So not the protection should be given to these minorities, so that protection they will have if they do lawful acts for conserving their language, script or culture. So if this right is not given, they will feeling suppressed there. And as you know, India is for all. The whole India is for all of its citizens. Anywhere from anywhere can go reside in the whole of India. Anyone can go anywhere and settle. So that is freedom. It is a fundamental right in Article 19. So you may be in minority in some place or in majority in some place. So you should be given that right. So basic essence था इस article का, that was to give extra assurance and protection to the minorities. But in giving that extra assurance, you are not taking away the right from the majorities. For example, say अगर उत्तर प्रदेश में किसी तमिल व्यक्तियों को आपने पर्टिकुलर राइट दे दिया, या फिर दिल्ली में मणिपुरी लोगों को राइट दे दिया अंडर दिस आर्टिकल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर स्क्रिप्ट, कल्चर और लैंग्वेज. सो द पीपल ऑफ अदर स्टेट like Manipur people is having the feeling of suppression in Delhi because of minority. So एक तरफ minority को तो right मिल गया to conserve their language, script और culture, but क्या same time हम ये कह दें कि दिल्ली वालों को अधिकार नहीं है या यूपी वालों को अधिकार नहीं है in their state कि वो अपना culture preserve नहीं कर सकते mere because they are in majority. So ये formula तो गलत हो जाएगा. So you have to give right to both. अगर एक को हम दे रहे हैं राइट, तो दूसरे का राइट हम ले नहीं लेंगे. दूसरे के पास तो ऑलरेडी राइट है, बट बाय दिस आर्टिकल वी आर गिविंग एक्स्ट्रा एश्योरेंस टू माइनॉरिटी पीपल. बट इन गिविंग द राइट्स टू द माइनॉरिटीज you cannot deprive the majorities also, and therefore the right actually belongs to all. So marginal heading में जो minority शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, that is basically manifesting the spirit of the section article. So write down in essence the policy of Article 29
is to provide the extra assurance to the minorities regarding their right to conserve culture, language, and script. And such conservation can be done by any lawful process. However, at the same time, the right to such conservation could not be denied to majority sections. Therefore, despite the marginal heading using the word minorities, the main article does not use the word minority. So, this article is available to all. Purpose was that to provide the extra assurance to the minorities, but the article is available to majority and minorities both, as per the language of the main article. अब कई जगह आपको ये बताया जाएगा it is for minority, that is wrong, अगर कोई ऐसा पढ़ाता है आपको तो. Then clause 2, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on the grounds only of religion, race, caste, language, or any of them. So first thing you will have to observe that first clause और second clause का कोई connection ही नहीं है. First clause conservation of language, script और culture की बात कर रहा है, और second clause कुछ और ही बोल रहा है कि इन grounds पर schools में या colleges में admission के लिए इन grounds पर आपको discriminate नहीं किया जाएगा. So they are talking about the school college admission, and first clause is talking about the conservation. So you must see that first and second clause, they are both related to cultural and educational rights, but they do not have any direct connection. They both to be read independently. बिकॉज जो कल्चरल स्क्रिप्ट और लैंग्वेज है ये सिर्फ आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू तो कंजर्व नहीं कर पाओगे. देयर आर सो मैनी अदर मेथड्स. वो एक मेथड तो है ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मैनी अदर मेथड्स. एंड क्लास 2 इज ओनली लिमिटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उसमें भी सेक्युलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. Because when they are talking about it cannot be discriminated upon these. So obviously they are talking about the normal educational institutions. For example, say अगर हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आपने एक religious educational institution बना लिया, अब वहां पर तो आप सिर्फ हिंदुओं को ही एडमिशन दोगे अगर आपने ऐसा डिसाइड कर रखा in that constitution. सिमिलरली मदरसा है तो मदरसा में अगर हिंदू पढ़ना जाए तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि दैट इज फॉर मुस्लिम्स. सो दैट वे यू सी इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट सच काइंड ऑफ प्लेसेस. इट इज सेकंड क्लाउज इज दे आर टॉकिंग अबाउट secular normal educational institutions. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds. So either it is totally funded by the state or maintained by the state, or it is receiving aid out of state funds on the ground only of religion, धर्म के आधार पर. Then race means प्रजाति के आधार पर. caste जाति के आधार पर. Then language भाषा के आधार पर. So इन 4 grounds पर आप discrimination नहीं कर सकते. लेकिन सेक्स के आधार पर, because there are several schools that is only for boys or certain schools which are only for girls. So are you not discriminating on the ground of sex? So in the Indian cultural value, the answer for this is in the Indian cultural value we are having that kind of space that certain schools are only for boys or only for girls. And therefore the sex is not made criteria for non-discrimination. So that's why there are certain girls schools are only Rajkiya Kanya Vidyalaya, all these. Similarly for boys also Rajkiya Bal Vidyalaya. So you can have these in India in the Indian social circumstances.
Therefore, sex is not made a ground of discrimination. इसलिए सेक्स को नॉन डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड नहीं बनाया. सो रिलीजन के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, दैट इज फाइन. देन प्रजाति के आधार पर दैट यू आर मोंगलॉइड और नेग्रिटो इस पर भेदभाव नहीं कर सकते. देन कास्ट के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते. देन लैंग्वेज के आधार पर. इन दिस क्लाउज नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जाता है, वो अपने बच्चे का एडमिशन कराता है किसी स्टेट स्कूल में, एंड इन दैट स्टेट स्कूल दे टेक द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, बट इन दोज स्कूल द मराठी इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट. तो क्या whether it is by looking at this clause whether you can deny that I do not want to study Maharashtra Marathi language, and do they allow that? So the answer is no. They make the language compulsory, so you have to take the Marathi and you have to study that, and it is not considered to be discrimination on the basis of language, क्योंकि उस लैंग्वेज को आपके ऊपर कंपल्सन में डाला जा रहा है क्योंकि वो आप ही को आगे जाके बेनिफिट करेगा. बिकॉज इफ यू गेट द जॉब इन टू द महाराष्ट्र, देन यू हैव टू have the conversation with the Marathi peoples, and they majority of people know the Marathi only. So when you have conversation with them, then you will feel comfortable. So it is not about the discrimination or loyalty to Maharashtra, it is about the benefits of that children. Now let's see Article 30 Clause 1. Please keep writing note down yourself. Here they are starting with all minorities, whether based on religion or language. So here they are clearly saying and using the word minorities, all minorities, in the article itself. It is not like Article 29, in which main article is not used word minority. Unlike 29 Clause 1, it was not used in main article, the word minorities. Only it is used only in marginal heading. Here in the main article, the keyword is all minorities. Then after that, they are classifying that also, whether based on religion or language. So all minorities, whether based on religion or language, shall have the rights to establish and administer educational institutions of their choice. So basically they are talking about the religious minorities and the linguistic minorities. These minorities have choice to establish plus administer. So these minorities have the choice or right to establish plus administer. Establish and administer what? Educational institutions of their choice. So किसी भी religious या linguistic minority को अपने choice का educational institution establish करने का और administer करने का right है. Now the question arose, what is the purpose of this article? Now some of you are having in mind that this article is for to protect language and religion. The answer is wrong, because for protecting religion, when you say it is protecting for religion, but religion protect करने के लिए article 25-26 already है. You already have article 26A where you can have established institutions also. You have right to manage established institutions for religious and charitable purposes. तो मान लो मैं अगर अपने धर्म को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, कंजर्व करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं धार्मिक संस्था बना सकता हूँ? द आंसर इज यस. मैं उधर अपनी क्लासेस डेली ऑर्गेनाइज करूँ और टीचिंग्स दूँ
that I can do. But under what article? That I can do under article 26A. अगर 26 में ना जाओ तो 25 में भी मेरे पास राइट है, right to propagate and profess my religion. So as a individual, I secure my right in 25 also. Then for example say I belong to any religious denomination. जैसे मैं आर्य समाज को belong करता हूँ for example. अब आर्य समाज में मिलकर कुछ लोगों ने एक संस्था बना लिया for promoting आर्य समाज. So that will be protected under article 26A itself. So उसमें 30 में जाने की जरूरत नहीं है. The reason for that is this कि दो आर्टिकल सेम कॉन्स्टिट्यूशन में cannot have the same meaning. दो आर्टिकल की एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में सेम मीनिंग नहीं हो सकती. अब आर्टिकल 25 और 26 में भी आपको वही राइट मिला है, रिलीजन को कंजर्व करने का राइट. एंड 30 में भी यू हैविंग द सेम राइट टू प्रोटेक्ट योर रिलीजन. देन इज इट नॉट यू आर डुप्लीकेटिंग द सेम राइट एंड सेम कंटेंट? क्या आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो सेम राइट और सेम कंटेंट को इन टू आर्टिकल्स? यस. सो इन दैट केस the article 30 should not be given the same interpretation as you give it to the 25. The article 30 should not be given the same interpretation as you given to the article 25 or article 26. Article 25 या 26 का पर्पज है आपके रिलीजन को कंजर्व करना, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना. उसके लिए आप इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हो. लैंग्वेज के लिए यू आर हैविंग आर्टिकल 29. यू कैन कंजर्व योर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज बाय व्हाटएवर मेथड इन द आर्टिकल 29. सो व्हेन द पर्पस ऑफ आर्टिकल 29 is to protect the language, so it cannot be the purpose of article 30 also to conserve the language, to protect the same language. Two articles cannot have the same meaning, and therefore you have to appreciate is this, that 25 and 26 with respect to religion and 29 with respect to language. When the conservations are done in these two articles, so 30 is not related to protection of your religion or language. So दो articles same एक purpose के लिए नहीं हो सकते. Then what is the purpose of article 30? You see 30 is talking about your right to establish and administer educational institutions of your choice. So why should a minority religious group or a minority linguistic group be allowed to establish an educational institution of their choice? Because religious educational institution तो आप आर्टिकल 29 में लैंग्वेज के लिए कर सकते हो और आर्टिकल 26 या 25 में रिलीजन के लिए कर सकते हो. तो फिर यहाँ पर कौन सा एजुकेशन? Here it is written for to ensure their to conserve the educational rights, to protect their educational rights so that their children go on into the mainstream with the same degrees and qualifications and they are able to get jobs in the mainstream of the society. Now, for example, say एक कोई स्टेट ले लो यूपी in which there are different minority groups and one of is Muslim. So according to the comparison of their population, if they feel that कि जो participation in the field of doctors medical line में उनके धर्म के बच्चों का is very less. Suppose if for example से 5,000 डॉक्टर्स हैं पूरे यूपी में या 10,000 हैं, उसमें से 200 या 300 उनके मुस्लिम धर्म के डॉक्टर्स पाए गए और बाकी के अदर धर्म्स के अदर रिलीजन से बिलोंगिंग डॉक्टर्स आर देयर इन स्टेट. सो अगर 5,000 में से 200 उनके डॉक्टर्स हैं और 4,800 अदर रिलीजन्स के हैं, देन इज इट नॉट the representation
of Muslim religion doctors are less. And the question is why? Because they are not able to be MBBS medical colleges, and therefore they are not able to get those degrees, and therefore the number of Muslims doctors are very less. Now the Muslim community of that state may disturbed by this, that कि हमारे धर्म के बच्चे मेडिकल प्रोफेशन में तो बहुत कम हैं, उनको भी डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सो बिग प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम इज कि जहाँ पे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होती हैं, इनमें उनके बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते, नॉट कम ऑन मेरिट। सो मेरिट्स में कट ऑफ ऊपर जाता है और उनके बच्चे इतनी पढ़ाई नहीं करके आ पाए, सो दे कुड क्लियर द मेरिट कट ऑफ। Or the other reason maybe is this, that the appearing student of Muslims and preparing student of that community is less of that religion. So most of them are not able to compete of a particular religion. We are taking just an example. So not many, but some of them are able to compete only because of the lack of education or because of the background, whatever the reason may be. So same thing will maybe happen to Hindus if in minority in some state. For example, say in Mizoram, Hindus are in minority, Christians are majority. So same case may happen with Hindus in Mizoram. So these people feel a kind of suppression कि हमारे बच्चे compete करके मेन स्ट्रीम में नहीं जा पा रहे, because they are not able to compete into the competition. So that will create some kind of divisive feeling in the community from the mainstream. उसको भी कर्व करना जरूरी है, उस फीलिंग को भी चेक करना, कंट्रोल करना जरूरी है। इसीलिए हमको डिक्लेयर कर दिया कि आप अगर माइनॉरिटी में हो तो आपके पास राइट है कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए अलग से कॉलेजेस या स्कूल्स बना सकते हो। जैसे आपने पाया कि मेजॉरिटी वाले बच्चे compete करके जिस तरीके से जा रहे हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, उस तरीके से आपके बच्चे नहीं जा पा रहे हैं इन द मेडिकल कॉलेजेस। सो ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसने क्या किया, दे एस्टेब्लिश्ड ए मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर 30 क्लॉज 1 में एक मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश किया, और अब उसमें क्राइटेरिया लगा दिया कि इस कॉलेज में 50% बच्चे सिर्फ मुस्लिम्स के या पर्टिकुलर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के पढ़ेंगे जिसने वो बनाया, एस्टेब्लिश किया है। If it is established by Muslim, then it is of Muslim, Hindus, or then it is of Hindus, Christian, or then it is of Christian, whoever। अब मेरिट लिस्ट में उनके बॉटम लाइन जितना भी हो उनको एडमिशन मिलेगा। सो सपोज इफ द मेडिकल फील्ड में रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इज वेरी लेस, तो उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि हम इस कॉलेज में 50 नहीं 80% रिजर्वेशन देंगे अपने बच्चों को, और सिर्फ 20% बाहर के धर्म के बच्चे पढ़ेंगे। सो ये भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आफ्टर द जजमेंट ऑफ टी इनामदार एंड TMF पाई, तो इनामदार में तो ये भी कहा है कि आप चाहो तो 100% रिजर्वेशन भी कर सकते हो। सो इस पॉइंट पर TMF पाई फाउंडेशन 11 जज बेंच विल अप्लाई नॉट ऑफ द सेंट स्टीफन वाला जजमेंट। सो यू कैन even go for 100% reservation as per the latest judgments, provided that you have fulfilled that criteria। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप 100% रिजर्वेशन क्यों ले रहे हैं, एंड दैट इज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल थिंग कि आप 100% रिजर्वेशन कर लो। सो इसीलिए बोला कि 80% रिजर्वेशन का एग्जाम्पल लेकर हम चल रहे हैं। नाउ द 80% मीन्स व्हाट, अगर मेरिट लिस्ट में उनके बच्चे compete नहीं भी होते, फिर भी they will given the medical education and they will become doctors। 20% of the general category through the merit list they will compete and they will also become doctors। उसका फायदा that the representation of the children of that community in the field of medical profession
will go up, and that is where they were able to get jobs etc. for themselves. And that is where the policy of Article 30 Clause 1 lies. उसी तरीके से मान लो कोई linguistic minority, suppose take an example of Tamil Nadu, where suppose Hindi people speaking persons are less, they are in minority. So the minority people of there of Hindi speaking having fear that since my children cannot speak Tamil, I cannot speak Tamil, so I cannot give that much good education of Tamil to him as compared to other children of Tamil parents, and therefore they will not get a good education in Tamil Nadu, and therefore they will not get admissions in those good educational institutions, and ultimately they are not able to get jobs and come into the mainstream. So if they want to establish an educational institution, maybe of Hindi language, in that particular state, to give the normal secular education to their children. That institution is not for giving education of Hindi language. It is for normal secular education for those children, for their children. MBBS, engineering, etc. Can they do that? So just religious minorities can do that. Similarly, the linguistic minorities also can do that. So that is the purpose of Article 30 Clause 1. Write down now. What is the purpose? The purpose of Article 30 Clause 1 is not to provide the right to linguistic or religious education. That is already covered under Article 25, 26 and 29 respectively. However, Article 30 deals with another aspect of linguistic and religious minorities, and that is it aims at curbing the feeling of minority being sidelined, curbing the feeling of minorities that they being sidelined, which these community may have in the matter of education. The religious and linguistic minorities, simply because they are minorities, may have fear that they may be suppressed by majority communities, and they may not be allowed to get into the mainstreams, and they may not get jobs for themselves. Article 30 Clause 1 gives educational right to these communities so as to enable them to establish educational institutions for secular purposes, so as to equip their children with the requisite qualification and degrees, so that they are able to move into the mainstream of the society. मीन्स आपको यहाँ पर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस एजुकेशन का राइट नहीं है. यू आर हैविंग राइट ऑफ सेक्युलर एजुकेशन so that they are able to move into the mainstream of the society. Then write down the words of their own choice. The words of their own choice does not refer to the choice of linguistic or religious education. Rather, it is the choice of the nature of education, that is the level of education. Rather, it is the choice of nature of level of education. जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हो या MBBS के लिए करना चाहते हो या नॉर्मल स्कूल खोलना चाहते हो, that choice you have got. You may go for fashion designing, polytechnic or management, law college. So that kind of choice is their choice. लेकिन language और religion का choice is not there in it, because that is already covered in 29 and 25, 26 respectively.
So this is one of the issues in Article 30. That is the purpose of Article 30 Clause 1. What is the purpose of Article 30 Clause 1? Now let's see how the other issues are. Do these institutions require an affiliation by the state education board, and can the state impose regulations upon these institutions, upon them? Regulations, restrictions. Then next point, what is the criteria for minority character? There is judgment of S. Aziz Basu versus Union of India 1967 of Supreme Court. Then a judgment of Allahabad High Court of Naresh Agrawal 2005 that we would discuss for this and fourth point, and point of Aligarh Muslim University, whether AMU is considered to be established by minority community or not. So what is the criteria for there being a minority institution? Minority institution होने के लिए क्या criteria होगा? What is the character of it? Then we have to see next point, what is the sprinkler effect? Then the question, next point we have to see is it essential that the said minority community should have established the institution for the purpose of claiming the rights of Article 30 Clause 1. For the purpose of claiming the right of Article 30 Clause 1. Then next point, what should be the extent of reservation in such institutions? Then next point issue is, can these institutions charge capitation, that is donation? Can these institutions charge capitation fees to generate funds in order to run these institutions? So can these institutions generate funds by charging the capitation fees or donations? That we have to discuss. Now you have to appreciate is कि minorities को right है, चाहे linguistic हो या फिर religious हो, कि वो अपने बच्चों के लिए educational institution establish कर सकते हैं, जिससे वो उनको secular education दे सकें, and they are able to get the same qualification and degrees, and they are able to walk into the mainstream in the government job etc. that are required. उसका purpose we have already discussed. Now जब तक उन institutions को इन्होंने establish तो कर दिए, उन institutions को affiliation नहीं मिलेगा by the concerned authorities like CBSE, ICSE etc. जब तक उन schools या colleges को, कॉलेज हैं तो UGC वगैरह से रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर मेडिकल कॉलेज है तो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन. सो इनको अगर एफिलिएशन नहीं मिलेगा, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, तो वो अपने बच्चों को डिग्रीज कहाँ से देंगे? सपोज इफ आई एम बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी और मैंने एस्टेब्लिश किया एक स्कूल 12th तक, एंड आई डू नॉट गेट द एफिलिएशन फ्रॉम स्टेट और फ्रॉम द CBSE. सो मेरे स्कूल से अगर बच्चे 10th और 12th कर भी लेते हैं, देन देयर रिजल्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और द सेंट्रल बोर्ड. सो इट इज यूजलेस टू पास द 10th 12th फ्रॉम माय स्कूल. सो इज इट नॉट दैट यू आर डिफीटिंग द वेरी पर्पज ऑफ दीज स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस? अगर आप एफिलिएशन नहीं देते हो इन स्कूल्स को बोर्ड से या स्टेट से, तो बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. एंड इफ दीज स्टूडेंट्स डू नॉट गेट सर्टिफिकेट्स 10th 12th मेडिकल whatever, then the very purpose of bringing them into the mainstream, making them capable of getting jobs, that will be lost. So if they have right to establish and administer the education institutions, they do also have right to get affiliation, but that is not an absolute right.
So that is not an absolute right. अब मान लो मैंने कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल लिया और एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं किया, छोटी जगह पर एक बड़े हॉल में मैं छोटे छोटे पार्टीशन कर कर, मान लो स्कूल का एग्जाम्पल ले लिया, बड़े से हॉल को लेकर उसमें छोटे से पार्टीशन कर दिए, छोटे छोटे, एक पार्टीशन में क्लास 1, एक पार्टीशन क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरीके से मैंने क्लासेस चला दी। और प्लेग्राउंड के नाम पर टेरेस मैंने खुली छोड़ रखी है, या फिर आई डू नॉट हैव द प्लेग्राउंड एट ऑल एंड आई एम नॉट हैविंग एनी लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, toilets are dirty, unhygienic. So the requirements that having a playground, ventilated classrooms, laboratories, library, computer room, hygienic toilets and all, staff room, तो वो सारी चीज कुछ भी fulfill नहीं है. Will the state give me the affiliation? Because for affiliation there are some basic requirements which you have to fulfill. That there shall be a school building, it should be properly ventilated, the classroom should be of a particular size, it should not be more than of particular size if you want affiliation, जिससे ज़्यादा बच्चे उसमें ना बैठ सकें। 100-200 बच्चे एक साथ इतना बड़ा बना दिया कि 100-200 एक साथ बैठा कर पढ़ाने की व्यवस्था कर रखी हो और पढ़ाते हो। So there is a limitation, एक क्लास में 50 और 60 बच्चे हो सकते हैं। So there are so many limitations. उसी तरीके से दिल्ली में एक्स्ट्रा एक लिमिटेशन है दैट 25% बच्चे आपको इकोनॉमिकल वीकर क्लास से लेने पड़ेंगे, उनसे आप फीस नहीं लोगे। So all those conditions are there. So even if I am running a minority institution, I have to fulfill those requirements. So I have to fulfill those requirements, except the requirement which is not necessary to be fulfilled by a minority, a educational institution which is set up by me. For example, जैसे काफ़ी स्टेट्स में है, जैसे दिल्ली में तो है 25% रिजर्वेशन टू पुअर्स और उनसे फीस नहीं लेंगे। दिस जो रिक्वायरमेंट इज नॉट अप्लाई अपॉन द institutions which is set up by the minorities. तो उन इंस्टीट्यूशंस पर ये नहीं, ये क्राइटेरिया, ये रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा, उनको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से और भी कुछ हो सकते हैं रिक्वायरमेंट दैट इज नॉट टू बी फुलफिल्ड बाय द माइनॉरिटी सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बट टू बी फुलफिल्ड बाय द अदर एजुकेशनल institutions which are generally set up. It is just an example. But जो other qualifications, that is teachers are should be of a particular qualification. They should having certain degrees which are essential. So if you are not fulfilling those criteria which are needed to be fulfilled, so if that institution is not fulfilling these requirements, then it means what? That it is not giving a good education, efficient education. अगर आपके टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, आप उनको एक बेसिक मिनिमम सैलरी नहीं दे रहे, आप अपने स्टाफ को बेसिक मिनिमम सैलरी नहीं दे रहे, then it means what? That you are not fulfilling the requirements, a good efficient vehicle of education. Then in that case, the right under Article 30 Clause 1 could not be allowed to be misused. It means I want to earn money, but I do not want to fulfill the requirements of a good education institution or education center, and therefore I may be denied from the affiliation. So what I want to try to tell you is that कि अगर आपके पास right to establish and administer educational institution है अगर, then that right is not absolute, that right is there, and that cannot be cannot do the interference in the establishment and administration. That is fine. So उस right के होते हुए there cannot be any interference in the administration and establishment of the institution. वहाँ तक तो ठीक है,
But when it comes upon the point of requiring the affiliation, the state can always put some regulations upon these institutions in the form of having a minimum number of staff, minimum uh, qualification of the staff, minimum area of the institution, classrooms, library, and laboratory setups, and so forth. So unless you will not fulfill those criteria, you will not get the affiliation. So यही हमारा issue था. Do these institutions have right to affiliation? Obviously the answer is yes, because without that they cannot provide degrees etc. to their children. But do they have the right to affiliation as an absolute fundamental right? They can establish any kind of institution. फॉर एग्जाम्पल से मेडिकल कॉलेज बना दिया, लेबोरेटरी उसमें है ही नहीं, 2-4 हॉल खरीद लिए या बनवा लिए और बोल दिया कि हमारा मेडिकल कॉलेज है, हम इसको चलाएंगे. सो प्रैक्टिकल्स कहाँ कराएंगे उनको, एंड सो फोर्थ. सो देयर द स्टेट कैन इम्पोज रेगुलेशंस. जिस तरह के रेगुलेशंस नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर लगते हैं, द सेम रेगुलेशंस विल अप्लाई अपॉन these institutions before granting the affiliation. But suppose if the institution fulfills all these requirements, regulations वाले सारे requirement अगर fulfill हो जाते हैं और उसके बाद में अगर स्टेट कोई कंडीशन डाल दे कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन में कोई टीचर का अपॉइंटमेंट करोगे तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर अथॉरिटी या मिनिस्टर, या फिर कॉलेज में पहले अपॉइंटमेंट करोगे तो वाइस चांसलर से परमिशन लेना पड़ेगा, या किसी से को निकालोगे तो वाइस चांसलर वीसी से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा. इफ दैट काइंड ऑफ कंडीशन दे पुट, दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज दे आर हैविंग राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग देयर कॉलेज. सो इट इज डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन देयर राइट ऑफ एडमिनिस्टर. एंड राइट ऑफ एडमिनिस्टर मीन्स appointing staff, taking disciplinary action against him, and removing the staff, apart from the other parts of the regulations. So if you take away that right from these institutions, so that means you are violating their right to administer, and that cannot be done. But if you put a condition that whenever someone have to be removed, principles of natural justice should be followed, and it should be given a proper hearing before removal, then that is fine, because that is the regulations regarding the principles of natural justice. So that is good because that should be followed everywhere. लेकिन अगर आप ये कहते हो कि वाइस चांसलर ने जब तक अपना कंसेंट नहीं दिया आप किसी को रख नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, then in effect you are affecting their right of administer, and that will not be allowed. So normal regulations to make these institutions a good vehicle of education, that will be permissible. But the moment there is excessive interference in the administration part and condition that you cannot do without the permission of the state, if that condition is put, then that is unconstitutional. Write down on this point. The state can impose regulations upon these institutions while granting them affiliation. These regulations are for the purpose of making these institutions good vehicle of education, so as to serve the purpose of bringing the children of these communities into the mainstream. However, any such condition which is an unreasonable interference in the right to administer will be unconstitutional. For example, if the condition is that the natural justice should be followed before removing staff, will be constitutional. But if the condition is no one can be removed unless the government authority approves,
then it is unconstitutional. So ये एग्जाम्पल तो बता ही दिया है मैंने आपको. So जो पर्पज है मेकिंग दिस इंस्टीट्यूशन गुड व्हीकल ऑफ एजुकेशन, इसके लिए रेगुलेशंस लगाए गए. और अल्टीमेट पर्पज है, जो लास्ट पर्पज है इन इंस्टीट्यूशन का, वो दैट इज द पर्पज दैट के जो उनके बच्चे हैं वो केम इनटू द मेन स्ट्रीम. और अगर रेगुलेशंस को अगर फुलफिल नहीं कराया जाएगा, सो दोज स्टूडेंट्स, दोज पीपल हु आर स्टडिंग इन द अदर कॉलेजेस, जैसे एक मेडिकल कॉलेज है जो जनरल है, उसमें दैट इज नॉट सेट अप बाय द माइनॉरिटी, वो सारी रेगुलेशंस फुलफिल कर रहा है. एक माइनॉरिटी का कॉलेज है, वो सारे रेगुलेशंस फुलफिल नहीं कर रहा, तो उसके जो बच्चे निकलेंगे दे आर मोर एजुकेटेड एंड मोर एक्सपीरियंस्ड with comparison to these students who are studying in these minority setup colleges. So जब वो फील्ड में भी आएंगे, they are unable to compete with those children, और वो मेन स्ट्रीम में फिर स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेट पर्पज वो डिफीट होगा. अदरवाइज ऑल्सो किसी मेडिकल कॉलेज में जो रेगुलेशंस को फुलफिल नहीं कर पाता और उसमें से लेस क्वालिफाइड अगर डॉक्टर्स निकलेंगे, then ultimately they will harm the society. उल्टी सीधी मेडिसिन देकर या सर्जरी करके उस तरीके से अगर हार्म करते हैं सोसाइटी को, so that will point out in that society a particular minority community. अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है कि भाई ये लोग इस तरीके के कार्य करते हैं, and the whole community would be marked for that. So उससे there are chances the fraternity of the society of gets affected, so that should not also be done. So इस पे और अगर कोई केस, there are several other cases if you want to find, you can find that like Saint Xavier versus State of Gujarat, इसी तरीके सेंट स्टीफन कॉलेज का भी केस है, and so forth. You can find several other cases if you want to make this answer more lengthy. Now, what is the criteria of minority character? Criteria of minority character. In this, write down some cases. First is TMA Pi Foundation versus State of Karnataka 2002 Supreme Court. 11 judges bench and Chief Justice B.N. Kripal delivered the judgment. Then second case is Bal Patil versus Union of India 2005 Supreme Court. Then third one is T. Varghese versus Cora K. George, that is 2012 Supreme Court. In this the point was same, taken from TMA Pi Foundation. It was held, write down, it was held that the minority character has to be examined at the state level and not at the national level. आप स्टेट लेवल पॉपुलेशन कैलकुलेट करोगे and the population which is less than the majority population, that would be considered to be minority. Suppose in that state the Hindus are in majority, then any other religion would be called minority. Write down upon the point of extent of reservation. In this case, St. Stephen College versus University of Delhi, 1992 Supreme Court. It was held that the maximum reservation to the students of the minority community can be 50%. But in TMA Pi case, it was held that depending upon the level of educational backwardness of the children of that particular community has to be examined, and accordingly the quantum of reservation as per the requirements can be given beyond 50%. Then write down the next case,
इसी में PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 सुप्रीम कोर्ट. The 7 judges bench and delivered the judgment by R.C. Lahoti, Chief Justice. So in this the points of TMA Pi Foundation was clarified. It was held that if the need of minority community be such, then even the 100% reservation can be given to the children of that community. Write down a comment in this case. Even though 100% reservation would be possible, it should be given in only extremely urgent circumstances, as ultimately these children have to move in mainstream and they have to live in a secular environment with the people of the other communities. Therefore, it will not be proper if they are brought up or educated in non-secular environment due to 100% reservation. Now let's take example of a minority community, suppose a Muslim community in UP. Now जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, suppose that के medical representing of that their community and in doctors are very less, so they have established a medical college under Article 30 Clause 1. And once they establish that, and they say that we need 100% reservations because Muslims in the field of medical professions in the state of UP are almost negligible, and therefore we want to reserve 100% seats for the Muslims only for being educated in this institution. So that is fine and allowed if अगर आपकी ज़रूरत है और बैकवर्डनेस उस लेवल तक का है, then you can even go for 100% reservations. Academically that is fine, but 100% reservations देकर are you not making the Muslims, because you are allowing that organization where the people of other religions are not there and they are spending their 6 or 5 year times in that educational institution in such environment where other religious peoples are not there, then are you not making a total non-secular environment, because they are not interacting with the people of the other religions. Similarly, you will talk about the linguistic minority. Suppose एक हिंदी वाला व्यक्ति कोई minority के basis पे एक institution खोल देता है और उसमें और किसी भाषा का स्टूडेंट नहीं आता. सपोज हिंदी का ना लेकर तेलुगु या तमिल का लेकर जो उधर से आते हैं और वो खोल लेते हैं इधर यूपी में, उसमें और कोई लैंग्वेज के स्टूडेंट नहीं आते. 100% रिजर्वेशन दे रखा है उसमें और कोई लैंग्वेज का आ नहीं रहा उसमें. सो यू आर क्रिएटिंग ए नॉन सेक्युलर एनवायरमेंट, एंड द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल इज टू मूव यू इन टू द मेन स्ट्रीम एंड यू हैव टू इंटरेक्ट विद द अदर persons also when you came out of the college. And since if you are brought up into purely non-secular environment, so that will affect the growth of the personality of those students. So इसी .% स्टीफन कॉलेज वाले केस में और अदर केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that you have two reservations. It can be reservation up to 50%, but you let the children interact with the people of other religion also, and therefore the secular environment in these institutions is the must, and therefore they held the 50% only. But again, what is the purpose? The purpose is to promote educational needs of the children of that community, and the other point is the secular environment. So ये दो चीजें, promotion of educational needs and the secular environment. अगर लेवल ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस इज एक्सट्रीमली हाई और 100% रिजर्वेशन की जरूरत है, देन कैन यू नॉट कंप्रोमाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्युलर एनवायरनमेंट. यू कैन गो फॉर 100% रिजर्वेशन, बट दैट यू शुड डू इन वेरी एक्सेप्शनल केसेस. आप 80% कर लो, 70% कर लो रिजर्वेशन, लेकिन कुछ दूसरी कम्युनिटी के बच्चे होने चाहिए so that the overall growth should be better.
because ultimately they have to move into the mainstream of the society. So ये एक्चुअली पॉइंट सेंट स्टीफन कॉलेज के केस में डिस्कस हुआ था. 50% का जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बनाया था उसमें ये डिस्कस किया था, उसका लॉजिक दिया था वाई. बट नाउ इट इज टू बी अप टू 100%, but try to maintain the secular environment. So usually the 100% reservation should be avoided. If any institution gave, it can be challenged into the court, and court may always seek an explanation from them as that why it is allowed 100% reservation. उसके लिए कोर्ट competitive data मांग सकती है, competent data, so as to prove why it is required 100% reservation. Now next you have to talk about the words establish and administer. And here is important, establish and administer. ये जो right to administer है आर्टिकल 30 क्लाउज 1 का, वो उसी को मिलेगा जिसने उसको establish किया है. अगर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक या रिलीजियस, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने का राइट मांगता है तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हमने ही इसको एस्टेब्लिश किया है. Unless you prove that the same minority community which is seeking right to administer today, the same community established the institution in the past, it will not get the right to administer. जब तक आप ये प्रूफ नहीं कर देते, because they are writing establish and administer, because first you establish it, then you get the right to administer. First you establish it, then you get the right to administer. So and is important in this. So ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी और ने establish किया था, आपने उससे ले लिया और आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो और आप एडमिनिस्ट्रेशन का राइट मांग रहे हो. That is not allowed unless you have proved that the minority community itself has established it. You will not be allowed to right to administer. And administration, you understand, the state will not interfere in appointment and removal, so and so forth. ये क्वेश्चन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए उठा था. सर सैयद अहमद खान in 1875 the Mohammedan Anglo-Oriental College was established by Sir Syed Ahmad Khan, but that was not the university. That was just a college. And I think 1920 में in British government time university बनी थी ये. But finally when the constitution came into the force and parliament came into the existence, the parliament has the power of the special enactment by which it has given that recognition status to the Aligarh Muslim University. So AMU as such was not created by Sir Syed Ahmad Khan. That college, the Mohammedan Anglo-Oriented College, that was established by him, but the shape of university when it took, it was not established by him. It was not by the minority community. It was by the enactment of the parliament. Now when it comes to the Aligarh Muslim University, who should administer the Aligarh Muslim University? Is it only the minority Muslim community which will administer it, or there should be some other regulations and the people of the other community can also participate? So that question the Supreme Court has answered long time back in 1967. That question has to be seen from the perspective of that as the Muslim minority community, whether the Muslim minority community established the university or not. And in the Aziz Bhasa case, it was held by the Supreme Court that the AMU Aligarh Muslim University, if the minority community want the administration, then they have to prove that it is established by that minority community, by them. The minority community through Syed Ahmad Khan established the college and not the university. जो यूनिवर्सिटी का स्टेटस है that should be regulated by the parliament,
and the right to administer should not be given to the Muslims minorities. And accordingly, they held the AMU cannot be administered by the minority Muslim community. इसको आप कंपेयर करो सेंट स्टीफन कॉलेज वाले केस से। सेंट स्टीफन कॉलेज वाला केस हुआ था वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देयर ऑल्सो द सेम राइट वाज क्लेम्ड बाय द क्रिश्चियन माइनॉरिटी and they were not claiming the university, they were claiming the college, and they have proved that the St. Stephen College actually was established by the Christian minority community, and therefore they do have the right to administer, and there the Supreme Court has accepted that because they have proved that the Christian minority community has established the St. Stephen College. So अगर मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक कॉलेज के लिए अगर हम बात करें then it would be fine, but for the entire AMU it is not fine. So first you should establish, then you will get the right to administer, because the word is establish and administer. So first you have to prove that your community has established, maybe an individual or maybe a group from the community, then thereafter you will get the right to administer. अगर establish किसी और ने किया, पार्लियामेंट ने establish किया, and आप कह रहे हो कि we are the minority community so we have right to administer, you will not get that right. So write down on the fourth point, it is essential that in order to claim the right to administer, the minority community shall prove that they had established the organization or institution. It was held in as Aziz Basa versus Union of India 1967 Supreme Court that Aligarh Muslim University was established by an enactment of Parliament and not by the Muslim minority community, and accordingly the right to administer could not be given to the Muslim minority community. Write down इसी पॉइंट पे नेक्स्ट केस नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। इसी पॉइंट पे राइट टू एडमिनिस्टर के लिए यू हैव टू प्रूव द राइट टू एस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इशू, स्प्रिंकलर इफेक्ट, थर्ड इशू। This point is there in TMA Pi Foundation. So sprinkler effect क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझो कि माइनॉरिटी कैरेक्टर, अगर स्टेट का अगर किसी कहीं का माइनॉरिटी कैरेक्टर देखना है then it should be examined, the minority character has to be examined of that community in that particular state. For example, let's take the example of Christians. Christians are in minority in any state. In most of the states in India, they are in minority. Let's take an example. Let's take the state Odisha. The Christian community is in minority in Odisha. Then do they have the right to establish the educational institution for the purpose of Article 30 Clause 1? The answer is yes. So they have established the school or colleges for the purpose of Article 30 Clause 1. And suppose they are giving the reservation of 60% to the children of their community. अब 100% रिजर्वेशन क्यों नहीं देंगे? जब फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे we would see there, because 100% रिजर्वेशन अगर देंगे तो मेरिट्स पर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, और मेरिट्स पे अगर नहीं लिया तो आप फाइनेंशियल एड है वो इंस्टीट्यूशन के लिए वो कहाँ से लाओगे? क्योंकि जब कम्युनिटी के लिए बनाया गया तो उनसे फीस तो आप लेते नहीं हो, या फिर नॉमिनल फीस लेते हो अगर लेते भी हो। सपोज अगर कोई मेडिकल कॉलेज है और उसमें 100% रिजर्वेशन दे दिया तो उसके एक्सपेंसेस तो काफी सारे होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस आप किधर से लोगे? गवर्नमेंट आपको एड देगी नहीं, कुछ को दे सकती है बट सपोज गवर्नमेंट एड नहीं दे रही, आपने सारे सीट्स अपने बच्चों के लिए रिजर्व कर लिया,
So from where you will generate the money for the running the educational institution. So कोई भी 100% रिजर्वेशन इस वजह से नहीं देता. So suppose 60% किसी इंस्टीट्यूशन ने रिजर्वेशन दे रखा है, 20% थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रख रखा है. सो इन 20% बच्चों से आप बहुत ज़्यादा फीस ले नहीं सकते. ऑब्वियसली इनसे ज़्यादा लोगे, बट जो नॉर्मल है दैट वुड बी चार्ज. अब रिमेनिंग 20% बच्चों को आपने डोनेशन के क्राइटेरिया में रख दिया. एक एक स्टूडेंट से 40-40, 50-50 लाख डोनेशन लेना चालू करा. उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए. वो लेस क्वालिफाइड बच्चे हैं बट डोनेशन पे उनको एडमिशन ले रहे हो. सो दैट इज हाउ यू आर रनिंग योर इंस्टीट्यूशन. सो अगर ऐसे 20% सीट्स आप रिजर्वेशन नहीं करोगे कैपिटेटिव फीस के लिए, देन हाउ विल यू रन योर इंस्टीट्यूशन. एंड देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ 100% रिजर्वेशन in small schools it could be applied practically, but in specialized courses, institutions, colleges, how will you run these institutions? And therefore they will normally not go for 100% reservation. काफी जगह इसमें एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है डोनेशन के नाम पर. TMFI फाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिमिटेशन भी लगाया है डोनेशन के मामले में. सो वी आर डिस्कसिंग कि ये 60% बच्चे दैट इज ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरी. तो क्या ये जरूरी है दैट दिस 60% चिल्ड्रन इज फ्रॉम दैट स्टेट? वी आर टेकिंग ऑफ एग्जांपल ऑफ ओडिशा, सो इट इज फ्रॉम ओडिशा ओनली. द आंसर इज यस. एवरी स्टेट हैज गॉन इट्स ओन रिक्वायरमेंट. हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. Christians may be in Odisha not as much represented of a particular kind of job, and therefore they are having a particular kind of educational requirement. Christians in Goa or maybe Christians in Kerala, maybe they not be as represented in the jobs. Therefore their requirements of educational rights may be comparatively lesser, maybe as state Christians of state of Orissa और बिहार और उत्तर प्रदेश. एंड therefore जो आपका क्राइटेरिया है ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि हम ओडिशा का देख रहे हैं, तो ओडिशा के बेसिस पर पाया कि दे आर इन माइनॉरिटी एंड दे आर इन दिस मच ऑफ नीड एंड 60% रिजर्वेशन आर गिवन. सो द बेनिफिट ऑफ 60% रिजर्वेशन should be given to the Christian minority community of Odisha only and not of any other state. If you are in minority in any other state, वहाँ पे अपना educational institution set up कर लो और वहाँ के बच्चों को उसमें reservation दो. So that is what the court is held in TMFI and many other judgments, कि आपको reservation अपने community के बच्चों को उन्हीं को दोगे आप जो आपके उस स्टेट में डोमिसाइल्ड है जहां पर वो इंस्टीट्यूशन खोला गया है. उसी पर TMFI फाउंडेशन में कहा गया था कि इट इज नॉट पॉसिबल बी परफेक्ट इन दिस. मीन्स इफ यू आर हैविंग 60% रिजर्वेशन फॉर चिल्ड्रंस इन ओडिशा, देन द टारगेट शुड बी कि कोई भी बच्चा दूसरे स्टेट का ना हो, बट देयर कैन बी सम स्प्रिंकलर इफेक्ट एंड सम चिल्ड्रन, वेरी लिमिटेड quantum of children of your community from the other state, they are given reservations in this institution and that will not be per se unconstitutional. क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चों का राइट उस पर्टिकुलर स्टेट में देखा जाएगा. उड़ीसा का के बच्चों का राइट उड़ीसा में देखा जाएगा, आंध्र प्रदेश के बच्चों का, क्रिश्चियन बच्चों का राइट आंध्र प्रदेश में देखा जाएगा. अब आंध्र प्रदेश के 60% जो रिजर्व्ड है उसमें से 40% आंध्र प्रदेश के आ गए, इसमें कॉलेज है ओडिशा का, और 20% रह गए ओडिशा के. देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. बट अगर 50-55% उड़ीसा के हैं और 5-7% अदर स्टेट के या आंध्र प्रदेश या किसी और स्टेट के कोई आ गए,
then it is not unconstitutional. That is called the sprinkler effect. स्प्रिंकलर मीन्स जैसे आपके पास अगर फाउंटेन पेन है उसको अगर छिड़कोगे यू विल गिव ए स्ट्रोक इन इट, देन एक बड़ा स्पॉट इज एट वन प्लेस एंड छोटे छोटे इज एट ऑल अराउंड, मीन्स देयर इज स्प्रेडिंग ऑफ वाटर और ऑल अराउंडिंग. उसी तरीके से थोड़ा बहुत यू मे फाइंड दैट द पीपल ऑल अराउंड may come, but primarily and majority of them should be from that state where the institution has been established. So write down NTMA Pi. It was held that the benefits of reservation should be given to the children of that community domiciled in that particular state only as the minority character in that particular state only, as the minority character has to be examined on the basis of state population and the need of the children of that state, examined on the basis of state population and the need of the children of that state. However, some sprinkler effect may be possible, that is, to a restricted extent it may be possible that some children of other states may also be given admission in such institutions, as long as that is limited to a small percentage of students. It will be constitutionally permissible. So that's it for this issue. Now let's see the sixth issue, financial aspect of this. There are two kinds of institutions, aided and unaided. Aided मतलब those institutions which gets aid from the government. मान लो 200 करोड़ का खर्चा है, उसमें से 125 करोड़ सरकार दे रही है. A subsidized kind, that is called aided. And unaided means they do not have any help from the government and they have to maintain their finances of their own. Normally these minority institutions, since there are too many minority institutions, the government policy is not to provide aid to these institutions, and therefore normally the minority institutions are unaided institutions. So the problem with this minority institutions is that they have to develop their own financial mechanism, because आपको right तो दे दिया उन्होंने establish and administer, लेकिन वो right fail कर जाएगा अगर आपको finances generate करने का मौका ना दें. अगर स्टेट कहे कि फाइनेंस पे हमारा रेगुलेशन होगा और हम एड भी नहीं देंगे, स्टेट एड भी नहीं दे रही और फाइनेंस को भी रेगुलेट करने के लिए बोल रही है, देन द राइट गिवन अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इज डिफीटेड अल्टीमेटली. सपोज एक कॉलेज है जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज फॉर विच इट इज एस्टेब्लिश्ड 50% रिजर्व कर दिया, 30% जनरल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के थ्रू आएंगे, वो नॉमिनल फीस देगा, रिजर्व कैटेगरी से थोड़ा हाई देगा बट नॉमिनल देगा. अब 20% उसमें से रिजर्व कर दिया, या फिर टोटल 20% बचा तो 15% डोनेशंस वालों के लिए और 5% एनआरआई के लिए रिजर्व कर दिया. आप एनआरआई से ज़्यादा फीस लेंगे उनके बच्चों से, फीस मतलब डोनेशन, जैसे इंडियन से 40-50 लाख ले रहे हैं तो एनआरआई से 1 करोड़ ले रहे हैं. So in that way they have generate the finances for running their institution, and this was held constitutional in the unique Krishnan versus State of Andhra Pradesh 93 Supreme Court के judgment में. It was held constitutional because if the capitation fees is not allowed, then how will they create the funds, and if they do not generate the funds for running the institutions, then they would not be able to run the institution. If they are not able to run the institution, then how can they exercise the right which is guaranteed under Article 30 Clause 1? Then
that practically defeats their right under 30 clause 1 and therefore they are given the right to generate those funds. So capitation fees को उन्होंने वैलिड ठहराया 1993 में. But what happened is before that and thereafter also, for example say किसी ऑर्गेनाइजेशन का नो प्रॉफिट नो लॉस एनुअल खर्चा या फिर थोड़ा बहुत नॉमिनल प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी एंड एवरीथिंग, मान लो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का नॉमिनल खर्चा सपोज 200 करोड़ पर ईयर है एंड दे हैव रिजर्व्ड 5% फॉर एनआरआई एंड सपोज 2000 उसमें टोटल सीट्स हैं. अब 2000 का 5% कितना हो गया 100 and 100 students of NRI are allowed to take the admissions. अब 20% कितना हो गया इनका 400 seats are reserved for capitation fees. बाकी के सीट्स रिजर्व फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से भरी जाएंगी. 500 सीट रिजर्व कर लिए. अब एनआरआई वाली कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे 1-1 करोड़ रुपए ले लिए इन एडमिशन फीस डोनेशन. 100 करोड़ उधर से आ गया. 400 जो दूसरी कैटेगरी के उनसे 50 लाख ले लिए. उधर से 200 करोड़ हो गया. खर्चा था 200, 100 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया. आई एम टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल, बट ऑन पेपर्स ऐसे ऐसे केसेस पाए गए जो इससे काफी ज्यादा हजारों करोड़ कमा रहे हैं. करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को, बट एक्चुअली में जैसे 50% दिखा रखा है 30% ही रिजर्वेशन देंगे. उधर भी गड़बड़ करते हैं. उसमें से जो 20% है वो भी डोनेशन वालों के लिए भूल देते छुपाकर. So in this way they are earning 500-600 crores per year. 20% रिजर्वेशन वालों में से भी खा गए वो. So in my example 500-600 करोड़ they are earning per year, but in reality they were earning more in several examples, several cases. So what is the purpose of Article 30 Clause 1? The purpose is to promote the minorities of linguistic and religious communities, and they are using that for the purpose of exploitation, charging high amount from so many students plus making huge profits. 19(1)(g में भी अगर फीस बढ़ती है that should be slowly and not all of sudden. But here the case is they are running the institution under 30 clause 1, Article 30 clause 1 and not under Article 19(1)(g. So most of the people are generating huge amount of money by taking advantage of Article 30 Clause 1. And this is what was brought to the notice of Supreme Court. And in the TMA Pi Foundation case, Supreme Court clearly held that charging capitation fees is not justifiable. Constitutionally it is not justifiable. Donation आप इस तरीके से नहीं दे सकते. You have to take reasonable fees. अब कैपिटेशन फीस का नाम चेंज करके रीजनेबल फीस कर दिया. अब द पॉइंट इज व्हाट इज मीन बाय रीजनेबल. अब रीजनेबल के लिए हम एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी बताएंगे. उसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होंगे, एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, एक इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होगा. तो ये 4 रिप्रेजेंटेटिव होंगे. तो वो हर इंस्टीट्यूशन का जो एक्सपेंसेस है उसको मॉनिटर करेंगे. लेकिन ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी के बारे में जो आया था ये 2003 में इस्लामिक एकेडमी में आया था. इस्लामिक एकेडमी केस में आया था. सुप्रीम कोर्ट में ने टीएमए पाई फाउंडेशन केस में रेगुलेटिंग अथॉरिटी की बात डिटेल में नहीं की थी. उन्होंने बस ये कहा कि दैट द एक्सपेंसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन must be managed, has to be monitored, has to be examined. So the suitable word is it is examined, has to be examined, and accordingly the income has to be monitored. मीन्स जितना खर्चा हो उसके हिसाब से आप पैसे चार्ज कर सकते हो. अगर आपका खर्चा 200 करोड़ का है तो आप 200 के प्रोपोर्शन में पैसे चार्ज करोगे. सो किसी से 1 करोड़ ले रहे हो दैट इज नॉट जस्टिफाइबल. 30 लाख पर हेड लेकर आपका काम चलता है देन डू इट. सो यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट ऑन योर राइट. द राइट आपका है 30 क्लॉज 1 का. यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट फॉर दैट द अदर स्टूडेंट्स एंड दैट विल नॉट बी अलाउड. अब इन इंस्टीट्यूशनों ने इस रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने क्या किया, ऑन पेपर्स अपने अपने खर्चे बढ़ा दिए. जहाँ 200 करोड़ का खर्चा था वहाँ 400 करोड़ दिखाने लगे ऑन पेपर्स. और फिर उसके बाद कैपिटेशन फीस और भी बढ़ा दिया. जहाँ 50 लाख लेते थे नॉर्मल स्टूडेंट से वहाँ 80 लाख लेने लगे.
कि एक्सपेंसेस बढ़ गए, हम क्या करें. सो अगेन दैट एक्सप्लॉयटेशन स्टार्टेड. देन अगेन द 5 जजेस बेंच इन इस्लामिक अकेडमी केस, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड. There they examined the judgment of TMA Pi Foundation case, and there the court held that it is not only about the reasonable fees, but it is about for regulating, monitoring your fees and accordingly charging the fees. And then it come about the regulatory authority. बट रास्ता निकालने वालों के लिए फिर भी रास्ता निकाल लेते हैं. रेगुलेटरी अथॉरिटी को मैनेज करने के लिए लोग उसको भी मैनेज करने लगे और खर्चा बढ़ा दिया. इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू मैनेज द रेगुलेटरी अथॉरिटी. सो स्टिल गोइंग ऑन, बट स्टिल काफी हद तक कर्टेलमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेटरी अथॉरिटी. अदरवाइज ऑल्सो एक वे तो सजेस्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. देयर आर मे बी चेंजेस इन फ्यूचर एंड फाउंड ए बेस्ट वे टू रेगुलेट दिस. So the main thing is 30 clause 1 cannot be used for exploitation in the name of education. You are giving benefit to the children of your community, that is fine, but Supreme Court held in TMA Pi Foundation and also in PA Namdar that education is actually a natural resource and human resource is the most important resource. So natural resource like education, उसको आप exploit नहीं कर सकते. You cannot earn huge profits. अगर आपको huge profits कमाना है, आपको huge profits अगर, तो आप 30 clause 1 का benefits मत लो. आप जाओ सीधा 19 clause 1G में and there you can earn whatever extent of profits you want. But there also the court held कि education के नाम पर आप unlimited profits नहीं कमा सकते. So exploitative charges in the name of education is not allowed. So that is what the Supreme Court held in PA Namdar as clarifying the judgment of TMA Pi Foundation. So write down in Uni Krishnan versus State of Andhra Pradesh 1993 Supreme Court. It was held that charging of capitation fees for the purpose of generating funds to these institutions is constitutionally permissible. However, in the TMA Pi Foundation versus State of Karnataka 2002 case, Supreme Court held that the charging capitation fees is unconstitutional. Rather, reasonable fees to be charged and reasonableness will depend upon the expenses required to run the organization. The Supreme Court held that the difference between 26A, Article 26A, 30 clause 1 and 19(1)G, इनका डिफरेंशिएशन किया था इस केस में, lies in the fact that in Article 26A, institution merely for religious purpose. Institution established is merely for religious purpose, though it can be even for secular education also. However, in such institution, profit making cannot be done as these are for purpose of charity, that is charitable institutions. In Article 30 clause 1, also huge profit making cannot be done, as that is a beneficial provision for the children of the minority communities. Next sentence. Article 19(1) clause G, however, gives the fundamental right to profession, trade, business, occupation, and under this article, profit making to whatever extent is permissible. But the right under Article 30 clause 1 cannot be claimed under this article. Rather, the state can regulate and control 19(1)G under Article 19 clause 6. अब Article 19 clause 6 आप अगर पढ़ोगे, the state can even monopolize your business. मान लो अगर 19(1)G में मैं अपना कोई बिजनेस कर रहा हूँ और कल अगर लॉ
या फिर पॉलिसी कोई स्टेट डिक्लेयर कर दे that such kind of business what I am doing is from tomorrow onwards is going to be nationalized. For example, colleges, मैंने प्राइवेट कॉलेज खोल रखा है और स्टेट पॉलिसी डिक्लेयर कर दे कि कल से जितने भी कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेज हैं दैट इज दे आर गोइंग टू बी नेशनलाइज्ड. All will be run by from now onwards by government of India. And that is constitutional because 19 clause 6 gives the government power to monopolize business. जैसे बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, so that is the power government have in 19 clause 6. मीन्स अगर 19(1)G में आप अगर अपना बिजनेस करते हो तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं और आपके ऊपर वो फियर एलिमेंट हमेशा होगा कि गवर्नमेंट कभी आपके उस बिजनेस को मोनोपलाइज कर सकती है. जनरली तो नहीं करती, सब आप तो प्राइवेटाइजेशन में हो रहा है, बट देयर शुड बी सम रीजन अगर ऐसा कुछ है. जबकि 30 क्लाउज 1 में ये फियर नहीं होगा. यू आर फियरलेस देयर, but you have to prove that you have established, you have to prove that you have fulfilled the requirements or regulations, then you will get the right to interfere and no one can interfere in that. So that is the extent of Article 30 Clause 1, which is not there in 19(1)G. So court held that कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, आप माइनॉरिटी हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है. अगर आप माइनॉरिटी हो और आपको बेनिफिट देना अपने बच्चों को तब तो 30 क्लाउज 1 में जाओ, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस करना है, तो आपके लिए 19(1)G है. इट इज नॉट डिफरेंशिएटिंग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी. 19(1)G. So people are misusing 30 clause 1. What they are doing, if a person is belonging to the minority community, they deliberately creating the organization in 30 clause 1 to seek the protection, and on the name of the protection to the minorities, they are exploiting and earning huge profits. So 30 clause 1 cannot be made basis for doing pure business. अगर pure business करना है तो 19(1)G में जाइए. So write down, while interpreting TMA Pai Foundation case, the Supreme Court in PA Inamdar versus State of Maharashtra 2005 Supreme Court judgment delivered by R.C. Lahoti, Chief Justice. It was held even under Article 19(1)G, the right to do business is restricted in matters of education. Education is natural resource and it can be used. It cannot be used. Education is natural resource and it cannot be used for exploitation purposes. It has to be ensured that a child cannot be deprived of education because some individual trying to make huge profit out of business. Write down another case on this topic. Islamic Academy of Education versus State of Karnataka 2003 Supreme Court. It was held in light of TMA Pai Foundation case. It was held that the reasonableness of fee has to be determined by a regulatory body consisting of a retired High Court judge, CA, and one representative each of the institution and the state. एक representative institution से होगा and one from the state. There should be an annual accounting and fee for a period of 3 years. There should be an annual accounting and fee for a period of 3 years shall be fixed, and after every 3 years fee shall be revived. So this topic is over now, and this case is not much related to this topic, but write down Society of Unaided Private Schools of Rajasthan versus Union of India 2012 Supreme Court, 3 judges bench, delivered by S.H. Kapadia, Chief Justice. And this is the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009.
provides for 25% reservation of class 1 standard 1 level students of reservation of class 1, 25% reservation for children of economical backward classes, economically backward classes के लिए 25% दिया गया था. This act is basically for the upliftment of economically backward classes के childrens के लिए. जो economically poorer sections हैं उनको अच्छे private schools में admissions नहीं मिलता. They study in the government school और उनके standard में फर्क है. So ये development और upliftment का burden है. So ये burden सिर्फ state उठाए ये जरूरी नहीं है. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी ये बर्डन उठाना पड़ेगा. इसका रिलेशन 30 क्लॉज 1 से कुछ भी नहीं है. एक्चुअली 15 क्लॉज 5 ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बेसिस पर ये रिजर्वेशंस कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं. एंड बैकवर्ड डज नॉट मीन्स ओनली कास्ट वाला बैकवर्ड, इट कैन बी इकोनॉमिकल पॉवर्टी ऑल्सो. सो गवर्नमेंट कैन मेक पॉलिसी दैट कुछ परसेंटेज को आपको विदाउट फीस पढ़ाना पड़ेगा या फिर नॉमिनल चार्ज इतने परसेंट फीस ले सकते हो आप, 20% या 30% जो आपकी फीस है उसमें से उसका ले सकते हो. देन दे आर बाउंड बाई दैट. और गवर्नमेंट चाहे तो अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी भी लगा सकती है, 50%, 20%, 30% SC ST और वो लगा सकती है. तो गवर्नमेंट चाहे तो उससे भी बाउंड कर सकती है. सो द क्वेश्चन इन दिस केस वाज, will that reservation policy apply upon even the unaided minority educational institutions also? Means जो 30 clause 1 वाले institutions हैं उनके ऊपर ये रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगा या नहीं. अब क्योंकि वो एक तो 50% रिजर्वेशन वॉट एवर दे हैव डिसाइडेड, वो रिजर्वेशन तो अपने बच्चों को दे ही रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल से 50% दे रहे हैं और 25% स्टेट ने लगा दिया इकोनॉमिकली पुअर क्लास के लिए. देन फॉर देम रेजिंग ऑफ फंड्स, जनरेटिंग फंड्स इज वेरी डिफिकल्ट एंड द वेरी पर्पज ऑफ 30 clause 1 gets defeated, and therefore it was held that this law will not apply upon the unaided minority educational institutions. But जिन minority institutions को गवर्नमेंट एड दे रही है उनके ऊपर ये कंडीशन लगाया जा सकता है, but not upon unaided, because unaided को अपने पैसे खुद जनरेट करने पड़ेंगे. So write down, it was held that the government policy of 25% reservation to economic poorer classes would not apply upon the unaided minority educational institutions established under Article 30 Clause 1. कारण आपको पता ही है कि you are burdening these educational institutions because they had given reservation already to their children, and after giving this your reservation, state giving reservation them, then you are overburdening them by the reservation and they cannot generate the funds. It is difficult for them to generate the funds and that would defeat the very purpose of Article 30 Clause 1. Now let's see 30 Clause 1A and 2. In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in Clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause. So that is fine. So ये जो institutions हैं, तो ऐसे institutions के पास actually बहुत huge property होती है. जो newly established हैं उनके बारे में तो उन पे तो नहीं हो शायद इतनी, but जो earlier established हुए थे उनके पास they are having huge property. So वो इन institutions के नाम पर काफी जमीन acquire कर लेते हैं और उनमें काफी जमीन बंजर छोड़ देते हैं, काफी में खेती चल रही है, etc etc. So totally misusing on the name of this fundamental right. अब सपोज स्टेट ने कोई लैंड एक्विजिशन की प्रॉपर्टी बनाई, वो पॉलिसी बनाई कि प्रॉपर्टी को हम एक्वायर कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस.
स्टेट ने लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी बनाई और बोल दिया कि हम तुम्हारा कोई लैंड है जो एग्रीकल्चर का पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, उसको हम एक्वायर करेंगे। सो दैट कैन बी डन। वाई? बिकॉज उससे उस इंस्टीट्यूशन के एजुकेशनल राइट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर स्टेट कहता है कि हम आपका प्ले ग्राउंड भी एक्वायर करेंगे, देन इट विल अफेक्ट द राइट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्योंकि वो बच्चे खेलेंगे कहाँ पर? बिकॉज फॉर ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ द प्ले ग्राउंड आर रिक्वायर्ड। सो प्ले ग्राउंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट for enjoying the right in 30 clause 1, the open space playground. If that land is acquired by the state, then the आपके स्कूल का जो पर्पज है, that is institution का पर्पज, that is got defeated. And therefore when the state acquire the land from them, then the state must make sure that their right to education, the right to effective education, that should not be adversely affected. Then second clause is the state shall not in granting aid to educational institutions discriminating against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. तो ये क्लॉज सिर्फ डायरेक्टिव है। एड देते समय द स्टेट shall not discriminate। और जब स्टेट एक्वायर करती है लैंड, देयर शुड बी compensation and compensation should be adequate. Plus you should not acquire the land from these educational institutions so that their very purpose got defeated. So that's it for this lecture and this class. Thank you for watching this lecture.